हार्ट हेल्थ यानी दिल की हिफाजत। हमारी उम्मीद है कि इस विषय पर आप हमारे अनेक प्रोग्राम्स तो देख ही रहे होंगे, बिकॉज एज ऑलवेज हमारी ये कोशिश है कि हम आप सब तक पहुंचाएं द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम द टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स। आज हम हार्ट से ही जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट पहलू आप सबके सामने रखना चाहते हैं, एंड दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट हेल्थ, कोरोना वायरस एंड कॉर्पोरेट हेल्थ। Recently, Scope ने हमें इनवाइट किया था to partner with them on a webinar जिसका टाइटल था Enhancing Corporate Health During Corona Crisis। इस 2 घंटे के सेशन में हमें काफी अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिली थी from our team of top global experts। हमारे अपने सब दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि वो ये लिंक क्लिक करके Scope की वेबसाइट पे और जानकारी पाएं। हमने सोचा आफ्टर we've had this amazing discussion, क्यों ना हम इस डिस्कशन की हाइलाइट्स आप सब तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। हाय एवरीवन, अब हमने एनहांसिंग कॉर्पोरेट हेल्थ ड्यूरिंग कोरोना वायरस वेबिनार तो देख ही लिया है, तो हमने सोचा क्यों ना हम आए स्कोप और बात करें अतुल सोपती के साथ, जो है स्कोप के डायरेक्टर जनरल। लेट्स चेक इट आउट। Thank you sir for having us here today। आप हमें बता सकते हैं कि ये स्कोप एंटिटी होती क्या है और इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? Scope is an apex body of public sector enterprises committed to enhance their competitiveness and excellence। Public sector enterprises या सार्वजनिक उपक्रम, इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका है इस देश की सामाजिक और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। कंट्री की जीडीपी में लगभग 13% इनका योगदान है। उसके अलावा जो है इन संस्थाओं में लगभग 11 लाख लोग डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं और 4 लाख लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट या कैजुअल वर्कर्स हैं। स्कोप बीइंग एन एपेक्स बॉडी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हमारा ये दायित्व है कि किस तरीके से इनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में वृद्धि की जा सके, और इसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एडवोकेसी करते हैं विभिन्न पॉलिसी मेकर्स के साथ, अथॉरिटीज के साथ। वी कंडक्ट लॉट ऑफ स्टडीज आल्सो, आउटकम बेस्ड स्टडीज, एक्शन बेस्ड स्टडीज। इंटरनेशनल नेशनल लिंकेजेस हैं, जैसे नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हम एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। इंटरनेशनल की बात करते हैं तो हम ILO, OECD, वर्ल्ड बैंक, IOE और कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में गए। हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कई प्रोग्राम्स उनका भी आयोजन करते हैं। उसमें हमारा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इन सब संस्थाओं को, पॉलिसी मेकर से भी और अलग अलग एरियाज में एक्सपर्ट से। अभी रिसेंटली आपने एक वेबिनार किया था ऑन एनहांसिंग कॉर्पोरेट हेल्थ। ये टॉपिक स्कोप पर कैसे आया एंड व्हाट हैज द रिस्पांस बीन टू इट? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन से पहले जो है हम लोग जो है स्कोप में कन्वेंशनल कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, कन्वेंशनल सिंपोजियम। उसके बाद जो है जब लॉकडाउन हुआ तो वी ट्राई टू कार्व आउट अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दिस क्राइसिस, और इस अपॉर्चुनिटी के तहत जो है हमने एक डिजिटल मीडियम को अडॉप्ट किया और विभिन्न विषयों पर हमने वेबिनार्स किए, जैसे कि हमने आर्बिट्रेशन में किया, लीगल मैटर्स में किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया, और इकोनॉमिक मेजर्स क्या क्या लिए हैं, सरकार ने क्या लिए हैं, फ्यूचर वर्क कैसा होगा, इन सब विषयों पे किया। उसके बाद हमने ये महसूस किया कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, इनकी हेल्थ और वेलबींग इस पेंडेमिक के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पूरा विश्व इससे प्रभावित है। ये नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक कंट्री है या स्पेसिफिक एरिया है जो अफेक्टेड है,
पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट आया हुआ है। एक डर का माहौल है, एक अनिश्चितता का माहौल है। इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम किया जा सके जिसमें हम विभिन्न पहलुओं पर को एड्रेस कर सकें, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इन सब एरियाज को एड्रेस करें। तो हमने सोचा कि एक प्रोग्राम किया जाए जिसमें हम कॉर्पोरेट हेल्थ की बात करें ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, और हम इसके कारण जो है हम जुड़े डॉक्टर चोपड़ा से, इप्का से और फैमेल से, और मिलकर हमने ये डिसाइड किया कि इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाए जिसमें हम ग्लोबली एक्लेम्ड स्पीकर्स को जोड़ सकें। थैंक यू। और इस वेबिनार का रिस्पॉन्स कैसा था, और क्या कुछ लर्निंग से या कुछ की टेकअवेज थे जो आपने पिकअप किए? अगर आप मुझसे एक शॉर्ट सप्लाई जानना चाहेंगी तो मैं ये बोलूंगा, सुपर, इनक्रेडिबल, अनप्रेसिडेंटेड। एक अभूतपूर्व और अविश्वसनीय सफलता मिली इस प्रोग्राम को। देखिए, हम स्कोप में हमारा जो है जनरली अप्रोच होती है कि कंटेंट्स पे फोकस किया जाए, पर कंटेंट के साथ स्पीकर्स के अच्छे स्पीकर्स का होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने इसमें उन स्पीकर्स को लिया जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत काम किया और बहुत ही वेल नोन नेम्स हैं। इसीलिए हमारे साथ डॉक्टर नंदा जुड़े, डॉक्टर चोपड़ा जुड़े, मिस मोना जुड़ी, और उन्होंने बड़े ही सरल रूप में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, टिप्स दिए, रिकमेंडेशंस दिया, और जिसको सब लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, अपने परिवार वालों के साथ सुना, अपने मित्रों के साथ सुना। और एक मुझे जो फीडबैक मिली है कि इतना अच्छा प्रोग्राम शायद हेल्थ के एरिया में कोविड के दौरान जो है उन लोगों ने नहीं देखा है, और ये एक दर्शाता है कि कितना सफल ये प्रोग्राम हुआ है, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव था हम उसको अचीव कर पाए हैं। और अभी भी प्रोग्राम हमारा जो है स्कोप की वेबसाइट के ऊपर और यूट्यूब पर अवेलेबल है, लोग लगातार देखते जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरीके का प्रोग्राम का हम आयोजन कर पाए हैं। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सो मच टू स्कोप। अब आपने ये तो सुन लिया कि इस वेबिनार का फीडबैक एंड रिस्पॉन्सेज बहुत ही पॉजिटिव रहे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टू डॉक्टर एच.के. चोपड़ा, who was a member of our esteemed faculty और जो है एक दिल्ली के preeminent cardiologist। हमने उनको contact किया digitally। Dr. Chopra, please could you recap the important points on the discussion of enhancing corporate health during the coronavirus crisis? What was the objective of this session? The main objective of my discussion today is to give you a brief synopsis of recently concluded international webinar on enhancing corporate health during corona crisis. You're all aware of this pandemic. This pandemic and crisis has risen many problems for the corporates, and their growth is stunted and the growth is blunted. So we'll discuss this in detail, what we should do so that we enhance the corporate health and they become more productive and the growth becomes enormous. You're all aware that corona pandemic is considered as a panic pandemic or an anxiety pandemic or a fear pandemic. Our aim is to eliminate anxiety and talk of health so that this disappears and we just witness this pandemic in a very effective and a positive manner. We have to learn to live with corona, but not live in fear of corona. The global scenario is very well known to you. There are more than 1 crore individuals suffering from corona all over the world, 5% of which is in India. And out of these 5%, 20% are in Delhi. The global mortality is about 5%, and the mortality in India is about 3%. Mode of spread is very well known to you. I won't discuss, it is already mentioned in detail in the link. It's by droplet infection. But one thing I must tell you today, the signs, symptoms are not only cough and fever, but there is something beyond. People lose smell, they lose taste. They may also have other manifestations, especially in people after the age of 55 or 60 with comorbidities. Because this virus is a very notorious virus. It causes the inflammation of all the blood vessels, right from the head to the toe. That's how there is a saying that this virus hijacks the body from head to toe.
when the inflammation of all the blood vessels takes place, it is a pro-inflammatory and pro-thrombotic. It may cause a cytokine storm in the lungs and may cause a lung attack by having a clot in the lung. And this clot is what we call as a pulmonary embolism with a very, very high fatality and cause breathing difficulty. It may also cause a clot in the heart, may cause a heart attack, may cause myocarditis and palpitation. It may also cause a brain attack by having a clot in the brain. It may also cause a clot in the leg veins and leg arteries. So clot can form anywhere. I know of a patient who came to me, 62-year-old, who had a simultaneous heart attack, a brain attack, and leg attack. He's no more. 62-year-old. The only risk factor was his age, and number two, he was diabetic. So I think the message is very clear that there are a lot of atypical manifestations in the people having underlying comorbidity. So we should know that precautions is the only way, universal precautions. And the best universal precaution is social distancing everywhere, especially in the corporates. And other precautions are like hand hygiene, frequent washing of hands, as well as using gloves sometimes when required. Similarly, respiratory hygiene by putting on a mask. Whenever you're in a corporate, please put on a mask. That's the best method. And make sure you cover your nose and cover your mouth. This mask is the best method which should be utilized in the corporate health. We can have a mouth hygiene and nasal hygiene by cleansing it or rinsing it, whatever method you adopt. But that is the way. And Dr. Chopra, what do we all need to know about testing and treatment? Testing, I think, is discussed in detail in the seminar or in the webinar. And it is told very clearly, PCR testing, we do an instantaneous testing, what is antigen testing, and now we're also doing an antibody measurement, and that may give us the idea about the enhanced immunity. Treatment point of view, no treatment till date, specific treatment. They say you give what we call as a Fabiflu tablets in a mild to moderate, or we give remdesivir in a serious patients, or we give what we call as antibodies, plasma antibodies in the people who suffered, and that may also help, and some people are benefited. Role of hydroxychloroquine has not been fully proved so far as the treatment is concerned, though we follow the ICMR guidelines for giving prophylaxis to the people who are exposed in the house as well as in the hospitals. Vaccine is in the process. I'm sure vaccine will be a big breakthrough in the treatment of virus crisis, which is happening in India today. Dr. Chopra, what is your advice for corporates in this environment? Can you share some tips on what we can do to enhance our health in this crisis? So it's very important. Once we understand the corona crisis, we have to talk of health of a corporate. And as you all know, when we say corporate, means it's an organization which is combined or a joint organization with a common theme. And the theme is growth and productivity. So health of employees of a corporate is the health of corporate. I firmly believe toxic emotions, toxic behavior, toxic relationship, and toxic consumption in any corporate will produce toxicity and they will be counterproductive. Now, what are the tips? What are the tips discussed in this 2 hours webinar? The tips were, number one, every employee in a corporate should exercise in daily routine, at least for 30 minutes every day, 7 days a week. So my recommendation is very clear that every corporate should have a health club. Every corporate should have a meditation room or a yoga room so that we nurture health in them. Number two is stress. Now, when we talk of exercise, it should be heart-friendly exercises like walking, jogging, swimming, dancing, cycling are the best exercises. Heart-unfriendly exercises should not be done like weightlifting or push-ups. Stress management is only but 2 methods.
One is meditation, which was discussed at length there, almost for about 20 minutes. And meditation may be primordial sound meditation, or transcendental meditation, or Raj Yoga meditation, or Vipassana meditation, or even chakra meditation, or Gregorian chanting, or Tibetan chanting. And all the 8 tips of yoga should be practiced. Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyana, and Samadhi. The details are very beautifully expressed in 2 hours webinar. And the 4th thing which one should do, very important, is diet. Mona Johar, all the way, appeared from US, and she spoke about the power and promise of nutrition. Nutrition fitness is the fitness of the employees, which is a very, very important thing. I also like to say here, what we eat definitely matters, but what is eating us matters more. Most of people in corporate world, they have only one denominator, and the denominator is what I should do that I get more finances. Most of us in any corporate are busy with one goal of earning money and losing health. And then we are busy in losing that money and trying to earn health. It's gone. The concept need to be changed. Naveen Sinanda, who was the professor of University of Alabama at Birmingham, he gave a very nice message on cholesterol fitness. So there was a discussion on nutritional fitness, and there was a discussion on cholesterol fitness. He said everyone should know what is their LDL, or bad cholesterol. The level should be less than 70, and the total cholesterol level should be less than 130, and triglycerides should be less than 130. HDL, high density lipoprotein, should be more than 50. So good cholesterol should be higher and bad cholesterol should be lower if you want to prevent heart attack, brain attack, leg attack, and lung attack. So this is a very important message. I hope आपको इस झलक से समझ ही आ गया होगा that there was a huge depth of information that we covered in this seminar. Now we will talk about food and nutrition. और हम बात करेंगे मोना जौहर से, जो हमें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे फूड को यूज किया जाए as a way to build your immunity. Today we will be talking with Mona Johar, who is a registered dietitian and functional medicine expert based out of New York. And अभी हुए scope webinar में मोना ने हमें एक बहुत informative presentation दी थी about heart health and food and COVID. So Mona, thank you so much again for joining us. Very, very good morning to all the viewers of Fam Health from New York. It's such a pleasure and such an honor to be here and to talk to you all and tell you about the latest in the field of nutrition and functional medicine. Thanks, Mona. So आपने अभी हुई presentation में एक slide दिखाया था जिसमें आपने कहा था कि कोविड की ट्रीटमेंट में pharmaceutical drugs को replace किया जा सकता है food से, and that is at its core functional medicine. So please आप थोड़ा हमें और हमारे viewers को बताइए कि functional medicine होता क्या है and what can we do with functional medicine during COVID? Yes, pharmaceuticals की अपनी जगह है, and जब ज़रूरत है, definitely I'm not at all averse to it, but nature ने आपको ये सब कुछ आपके अपने vegetable gardens, आपके spice closet, आपके kitchen के अंदर दिया है, and हम वही चीज जो कि एक दवाई का इस्तेमाल करने के बजाय हम लोग चीजें अपने closets, अपने yards, अपने vegetable gardens में से निकाल के हम वही चीजें दवाइयों को replicate कर सकते हैं. जैसे अगर आप देखें तो 3 कैटेगरीज में एंटीवायरल्स को हम लोग डाल सकते हैं. एक तो एंटीवायरल्स होंगे जो कि अगर बैक्टीरिया, अगर वायरस, अगर कोई भी माइक्रोब आपके अंदर जाता है तो आप एकदम से तो बीमार होते नहीं है, 1, 2, 3 दिन लगता है डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉम्प्रोमाइज्ड योर सिस्टम इज. उसमें क्या होता है कि वायरस आपके अंदर जाता है और फिर वो रेप्लिकेट करता है, काफी स्पीड से रेप्लिकेट करता है और बढ़ जाता है, जल्दी से रिप्रोड्यूस करता है और बढ़ जाता है, और तब आपको खांसी, जुकाम, दर्द, सिर दर्द, लाइक कोई भी जो भी सिम्टम्स हैं वो आने शुरू होते हैं.
सो एक जो कैटेगरी है वो है रेप्लिकेशन को स्टॉप करने की, राइट? तो उसके लिए जैसे आपने सुना होगा रेमडेसिविर का नाम आपने जरूर सुना होगा। सो रेमडेसिविर जो है वो स्टॉप करता है आपके जो वायरसेस हैं उनको रेप्लिकेट करने में। सो जैसे अगर आप एट द फर्स्ट ऑनसेट है, अगर आप वो खाएंगे तो आपका रेप्लिकेशन बंद हो जाएगी। दूसरा है इम्यून मॉड्यूलेटर। सो आपका इम्यून सिस्टम कई बार होता है दैट बहुत ज्यादा अपरेगुलेट हो जाता है और बहुत हाइपर रिस्पॉन्स करता है, या इन मोस्ट केसेस बहुत ज्यादा ही सप्रेस्ड होता है। सो दोनों ही खराब हैं, एंड स्पेशली कोविड के केस में दोनों ही खराब हैं। सो एक कैटेगरी ड्रग्स की है जिसको हम कहते हैं कि इम्यून मॉड्यूलेटर्स, कि वो जो डिप्रेस सिस्टम है उसको ऊपर लाता है और जो हाइटेंड है उसको नीचे लाता है, और एक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। सो और जो तीसरा है, ऑफ कोर्स वी नो दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरीज, आपके एनसेड्स हो गए या स्टेरॉइड्स हो गए। सो ये जो तीनों कैटेगरीज हैं, हम इनको एक्चुअली अपने किचन में ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। Oh, that's interesting. Can you tell us how exactly? Absolutely. But I would definitely like to say that start with your kitchen pharmacy. But if you see that your symptoms are progressing at a very fast rate, please reach out to your doctors and take the medication at the right time. So, ये नहीं करें कि आप सिर्फ यही नेचुरल चीजें खाते रहें, because इनका long term effect होता है। But of course, at this time, you should be taking these regardless. अपनी पूरी फैमिली के साथ आपको ये करना चाहिए। So in a recent conversation that we had heart health के बारे में, हमने सुना कि in addition to following all the precautions जैसे कि social distancing करना या फिर घर पे रहना, हमें साथ में vitamins और दूसरे supplements भी लेने चाहिए। So if you can tell us कि functional medicine में कौन से foods होते हैं जो immunity boost करते हैं, जो हम एक supplement की तरह ले सकते हैं? Antivirals, सबसे ये तो हमारे like age old, I think every single person in India would know ginger. Ginger कितना बड़ा antiviral है। किसी को खांसी जुकाम होता है, सबसे पहले I remember मेरी mom ही घर में करती थी। I was like kind of brought up like that कि खांसी जुकाम का first sign हुआ, पर जल्दी से ginger juice निकाला, उसके अंदर raw honey डाला और आप सारा दिन पीते थे। and guess what? Because इसका जो effect है वो replication को stop करना है। It actually just reduces the time and intensity of your illness, and it actually does. There's white papers on it. There's so much research on it. It is not mumbo jumbo. So मोना, हमें कितना जिंजर यानी कि कितना अदरक हमें कंज्यूम करना चाहिए दिन में? अब बिकॉज मैं अपनी पूरी फैमिली का, हम लोग 4 हैं हमारी फैमिली में, सो मैं पूरी फैमिली के लिए करती हूँ। मैं तो काफी सारा जिंजर पील करके, अच्छे से वॉश करके पील करके, और मैं तो उसको आई पुट इट इन अ ब्लेंडर और उसको ब्लेंड कर देती हूँ, थोड़ा आसान हो जाता है। एंड फिर उसके बाद उसका सारा जूस निकाल के like about I would say about 2 ounces, about इतना अगर एक ग्लास में, जैसे सिर्फ इतना सा, I mean मेरे ग्लास का बेस भी ज्यादा है, so I don't know, like about 2 ounces I would say per cup, and it can be taken in divided doses. इसका मतलब है कि जैसे बच्चे एक बार में इतना सारा नहीं पिएंगे, so आप दिन में 2 बार या दिन में 3 बार नहीं, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, because सारे दिन की आपको एक continuous protection मिलती रहती है। So उसके अंदर about 2 ounces के अंदर आप a teaspoon of raw honey मतलब एक होता है which is available in regular grocery stores, that is literally high fructose corn syrup, वो जिसको कहते हैं नकली honey होता है। So getting raw honey is very very important, because raw honey के अंदर by itself it is very high in antimicrobial activity. इसका मतलब है कि कोई भी microbes होंगे, कोई भी pathogens होंगे, वो उसको reduce करता है उसकी intensity को। So combining these two in the morning, amazing effect. And if you can do it, have it like maybe 2 or 3 times a day, whatever your family schedule. Allicin, which is another very potent antiviral. Allicin is garlic. Lasan.
Yes. So लहसुन के अंदर, which I also talked about in the presentation, is most of the people don't know कि लहसुन के अंदर जो allicin enzyme होती है needs to be activated. So जैसे आपने लहसुन को crush किया या blender में डाला या जो भी किया, उसको आप 1 या 2 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए आप उसको थोड़ी देर के लिए रखिए before you start cooking it, because जो allicin enzyme है वो after 1 or 2 minutes it starts activating. तो उसका जो beneficial health effect है वो 1-2 मिनट आप उसको रखें, वो enzyme activate होने दें, फिर उसको अपने खाने में यूज करें. That's when it becomes like a very very potent antimicrobial. जैसे मैं क्या करती हूँ कि पहले गार्लिक को क्रश करके या चॉप करके रख देती हूँ, उसके बाद अनियन चॉप करती हूँ. जितनी देर में मैं अनियन चॉप करती हूँ उतनी देर में मेरा गार्लिक के अंदर allicin enzyme एक्टिवेट हो जाता है, and then I just use it in my cooking. That's great to know, Mona. Thank you so much. And what are some foods that you recommend as antiviral foods? So during COVID time, it's very, very essential to maintain your levels of vitamin D. Primarily because it is so essential. It controls about 360 different enzymatic reactions in your body. And every single cell of your body has vitamin D receptors. So अगर आपका vitamin D level appropriate नहीं होगा, adequate नहीं होगा, तो आपके ये जो functions हैं ये properly नहीं होंगे. So making sure that you get some sunlight. I know आजकल गर्मियाँ हैं और किसी का दिल नहीं करता बाहर जाने के लिए. So making sure कि at least आप कोई vitamin D का supplement ले रहे हैं, which is according to the all the organizations out here and IFM, 5,000 IUs per day is being recommended for at least until we are being exposed to the virus. So these 3 things. So vitamin D हमें रोज लेना चाहिए. So what do you recommend is the amount of vitamin D that we should be taking? 5,000 per day की recommendation है इस वक्त, पर अगर किसी का से लेवल बहुत ज्यादा लो है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें. And usually हम उनको 10,000 IUs per day for about a week, 2 weeks, depending कि कितना लो है. अब हर इंसान डिफरेंट होता है, उनके लेवल्स डिफरेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल जो लोग बहुत लाइट स्किन है वो ज्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब करते हैं वर्सेस जो कि डार्कर स्किन पीपल हैं, देयर एब्जॉर्प्शन फॉर विटामिन डी इज लोअर. So, we have to kind of wait out. There's no cookie cutter method, but a general recommendation out there is for 5,000 per day. You can take it as a weekly dose. Kai weekly doses bhi aati hain, and I know India mein you do get those sachets jo ki aap weekly 1 sachet per week le sakte hain. Any of those, just call your doctor, check with them, and just make sure that it is appropriate for you. मोना, आपने अपनी प्रेजेंटेशन में इम्यून मॉड्यूलेटर्स के बारे में बात की थी. वो होते क्या हैं and can you explain a little bit? Of course, was the immune modulators जो मैं आपको बता रही थी कि immune system बहुत heightened है या बहुत depressed है, उसको एक homeostasis में लाने के लिए के अंदर quercetin. Quercetin is usually present in apple peels, in berries, so stuff like that. So eating like apples with your peels, don't take them off. हम यूजुअली एप्पल का छिलका फेंक ही देते हैं. हाँ, पर उसके अंदर क्वेरसेटिन होता है जो कि बहुत ही बढ़िया इम्यून मॉड्यूलेटर है. So that is the reason why we ask you कि अच्छे से आप एप्पल को वॉश करें and have it with the peel because of its beneficial effects. The other thing is, of course, vitamin A, which is all your green and the orange vegetables and fruits. Vitamin C, vitamin D, again in this category. When you eat foods, it has what we call a pleiotropic effect. इसका मतलब कि एक चीज, एक खाना आपको बहुत सारे benefits देता है, which are across so many different categories. अगर आप pharmaceutical लेते हैं वो आपको एक चीज करेगी, whereas food कितनी different सारी categories को cover करता है. That's why we say eat food first. Let food be your first medicine. So that's the reason why we say that. The other thing is N-acetylcysteine. Generally लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना हुआ. Generally लोग सुनते हैं glutathione के बारे में, which is the master antioxidant.
N-acetylcysteine जो है वो एक प्रिकर्सर है, जैसे कि पहले N-acetylcysteine होता है और वो ग्लूटाथायोन आपकी बॉडी के अंदर बनाता है, आपकी बॉडी को इनकरेज करता है और ग्लूटाथायोन बनाने के लिए. So usually N-acetylcysteine, especially in COVID time, बहुत ज़्यादा important है, primarily because it's what we call a mucolytic. Mucolytic होता है जो कि आपकी phlegm को, जो बलगम को thin करता है. So with COVID, why do people get on the respirators so much? Is because उनकी जो mucus है बहुत ज़्यादा thick हो जाती है और viruses उसके अंदर जाके trap हो जाते हैं और multiply करना शुरू कर देते हैं. उसको prevent करने के लिए उस आपकी म्यूकस को थिन रखना है हर वक्त, कि जो भी आपका जो फ्लेम है, जो बलगम जिसको कहते हैं, वो हमेशा पतली रहे ताकि जो वायरस है वो उसके अंदर अटके नहीं, and you can breathe properly and there is no need for you to get onto the ventilators. So excuse me. So इसका जो mostly the most common food groups is the onion family. So onions, leeks, garlic will come in here, shallots. So हर तरह की प्याज are what are really rich sources of N-acetylcysteine, which will make glutathione in your body. You can also get it from eggs, from sunflower seeds. So increasing the consumption of onion in your food is amazing at making your phlegm thinner. Then we have the pre and probiotics. Talked about this on the show so many times. Very important to consume fermented foods, which are the probiotics, and prebiotics are the food for your probiotics. So having fermented food, having good sources of fiber, asparagus खाएं, और जितने आपके fibrous foods हैं उनको ज़्यादा कंज्यूम करें, बिकॉज वो जो फाइबर है आपके खाने में वो आपके प्रोबायोटिक के लिए फूड है, गुड फूड है. सो इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फाइबर will increase the amount of good bacteria in your body. So Mona, when you're talking about probiotics, क्या दही एक probiotic होता है? What is dahi's role in probiotic foods? Yes, because see, yogurt is cultured, so it has the probiotics in it. So increasing the amount. आजकल वैसे भी गर्मियाँ हैं. Have it like as chas or have it as lassi, salted, not sweet. Those would be good. Having it in as a raita form, whatever form you like. So Mona, one of the foods that I think we are all talking about, not even just in India but everywhere, is haldi. और I remember आपने कच्ची हल्दी के बारे में बात थोड़ी की थी. So can you just explain to us the benefits of haldi again? 100%. That would be the next one anyways, because haldi again is just one of the most amazing food out there that works at so many different levels, and especially at bringing down this inflammation. So haldi in खाने में डालें. मेरे को कच्ची हल्दी ज़्यादा अच्छी लगती है, because that way I know कि उसके अंदर कोई food colorings नहीं होंगे, कोई preservatives नहीं होंगे, कुछ adulteration नहीं होगी. That's why I like to use कच्ची हल्दी a lot more than the हल्दी का powder. But whatever you can get is fine. कच्ची हल्दी के साथ सिर्फ एक ये problem है कि कच्ची हल्दी में एक substance होता है curcumin, and curcumin is what gives you that protective effect, what it gives you that anti-inflammatory effect. So जब आप जो curcumin है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत ही स्पेसिफिक वे में होता है. हम लोग हमेशा हल्दी को तड़के के अंदर डालते हैं, राइट? सो हल्दी को किसी फैट सोर्स के साथ यूजुअली लिंक करते हैं कि अगर आपने उसको अपने खाने में डाला है तो उसमें कुछ ना कुछ ऑयल तो होएगा ही. So that is kind of the way haldi works, is with some bit of fat, some oil in whatever form it is, and बहुत ही थोड़ी सी काली मिर्च. ये दोनों चीजें आपकी हल्दी के साथ जब होंगी तो जो curcumin है, which is the most potent part of your haldi, will get very well absorbed by your body. So आप अगर हल्दी का अचार भी डाल रहे हैं, कच्ची हल्दी, गाजर, मिर्च, that's like my favorite. उसके अंदर मैं हमेशा थोड़ा सा ऑयल भी डालती हूँ, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा,
हमेशा डालते बिकॉज दैट इंक्रीजेस द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ curcumin into your body. So, ये थी कुछ highlights from our webinar, Enhancing Corporate Health During Corona Crisis. हमें उम्मीद है कि आपको कुछ नई जानकारी मिली या आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली इस हाईलाइट रील से जिससे आपका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए. If you want to watch the whole webinar या अगर आपको और जानकारी चाहिए तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा पूरा वेबिनार देख सकते हैं. Stay home, stay safe.